वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की बात करें तो आज एक बार फिर दबाव में दिख रहे हैं बाजार, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज में कटौती की। उसका इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे भी पड़ा, जहां पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ देखने को मिला। यील्ड भी थोड़ा बहुत संभली है, लेकिन अभी भी ऊपर के स्तरों पे ही यूएस ट्रेजरी बिल्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स एंड लॉन्ग शॉर्ट बॉन्ड्स जो है उनकी यील्ड अभी भी ऊपरी स्तरों के आसपास ही है, थोड़ा हल्का होने के बावजूद। मार्केट में आज दबाव है, लेकिन आईटी सेक्टर एक सेक्टर है जो थोड़ा बहुत सहारा दिए है बाजारों को। लेकिन हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, आईटीसी, HDFC बैंक, ICICI बैंक आर पुटिंग सम प्रेशर ऑन द मार्केट्स। इकोनॉमी में क्या शिफ्ट हो सकता है फेड के 25 बेसिस पॉइंट कट करने से? अगर टोटल देखें तो अभी 75 बेसिस पॉइंट्स फेडरल रिजर्व जो है पिछले 3 महीनों में ब्याज दरों में कटौती कर चुका है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कटौती करेगा आने वाली पॉलिसी में, और ट्रंप के आने से क्या पॉलिसी में शिफ्ट्स हो सकते हैं? इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रसन्नजीत के बसु, ही इज अ लीडिंग इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, और मेरे साथ स्टूडियो से मेरी सहयोगी मोहिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। वेरी गुड आफ्टरनून मिस्टर बसु, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। And since we are in a new Samvat, wishing you a very happy 2081. Wishing you the same. Thank you so much, sir. Sir, पहले ट्रंप की बात करते हैं. So the Trump is back in office. So what kind of a policy shift? आपको क्या लगता है कि पॉलिसी में क्या बदलाव हो सकते हैं? इंडिया के साथ रिलेशनशिप्स as far as the trade goes कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि हमें पता है कि टैरिफ्स को लेके जो है ट्रंप जो है इंडिया पे टैरिफ्स लगाने की बात भी कर चुके हैं। चाइना तो उनके रडार पे है ही है। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी शिफ्ट्स डू यू सी एज ट्रंप जो है ही इज बैक इन ऑफिस? तो पहले बात ये है कि ट्रंप और मोदी जी के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। जो रिश्ता है वो बहुत करीब है, और इसके वजह से मेरे ख्याल में भारत के लिए बहुत कुछ अच्छे चीज़ होंगे, जैसे कि जियोपॉलिटिकली देयर विल बी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स टू इंडिया। इंडो पैसिफिक पे ध्यान बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और नेटो पर असर पड़ेगा। नेटो विल बी डाउनग्रेडेड। नेटो अगले 4 सालों में will basically be withering, and US focus on NATO will be sharply reduced, and instead the focus will be on the Quad and on the Indo-Pacific. So from that perspective, अगर US और भारत के बीच एक समझौता हो, जियोपॉलिटिकल समझौता हो, तो फिर it beggars belief that the US will try to impose tariffs on India. पर tariffs अगर किसी तरह लग जाता है तो it will be on all countries. Trump has spoken of imposing a 10% tariff on all imports. Yes. That is a possibility. और अगर वो होता है तो it'll affect all countries. It'll slightly it'll have a slightly negative impact on global trade. But the more important thing is कि चाइना पे 60% टैरिफ लगाने जा रहे हैं अमेरिका। और अगर आप देखें पिछले जो ट्रंप टर्म था उस पे ट्रंप ने करीब आधे इंपोर्ट जो चाइना से यूएस पर जो जितने इंपोर्ट्स आते हैं आधे में 50% में टैरिफ्स लगाए थे। और उसके वजह से क्या हुआ है कि China's share of US imports was nearly 22% in March 2018 before those tariffs were imposed. They are now down to 13%. तो बहुत असर पड़ा है चाइना पे। अच्छा, पर जो किया गया है, he's only imposed tariffs on half of imports from China. अब जो बोल रहे हैं, all imports from China will carry a 60% tariff. Even if he makes it only 30%, it will have a very significantly negative impact on China. And the beneficiaries will be other countries in Asia, in particular India.
तो अगर आप देखें अब तक जो बेनिफिट्स आए हैं, most of the benefit of a diversion of US imports from China, the biggest beneficiary has been Mexico, second biggest has been Vietnam, and a fairly distant third has been India. But I would say going forward, India will be a much bigger beneficiary because of the geopolitical interest that Trump particularly has in boosting the Quad and India's role in the Indo-Pacific. तो और एक चीज है कि अगर हमें इसके बेनिफिट लेना है, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स जो सितंबर 2020 में पास किया गया और पिछले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कोविंद ने जो जिस पे हस्ताक्षर दिए हैं, जिस पे साइन कर चुके हैं, अक्टूबर 2020, 4 साल हो गया। 4 साल पहले इट हैज बीन साइंड ऑफ बाय द प्रीवियस प्रेसिडेंट, देयरफॉर इट शुड बी द लॉ ऑफ द लैंड, पर अब तक नोटिफाई नहीं हुआ। तो अब क्या चाहिए? सेंटर मस्ट नोटिफाई दीज लॉज, ए बी state governments that want to implement these laws and want to benefit from labor-intensive manufacturing should do it quickly. तो मेरे ख्याल में अगर नीतीश कुमार अगले चुनौती में जीतना चाहते हैं तो उस बिहार में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नोटिफाई करना चाहिए, ताकि उस जिस प्रदेश में सबसे कम where we have the lowest labor costs, वहां पे लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और अगर वहां नहीं होता तो उसके जो बगल के प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में, वहां करना चाहिए। एंड इफ दैट हैपेंस, वी विल सी अ फ्लड ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग टू दीज स्टेट्स। नाउ द अपॉर्चुनिटी इज इवन ग्रेटर बिकॉज बांग्लादेश इज इन टर्मोइल। और एक चीज है कि बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, पिछले 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि हिंदुओं के अपने घर पे आके आर्मी लेकर के मार रहे हैं हिंदूज को उस देश में, हमारे बगल के देश बांग्लादेश में। तो अगर और एक चीज है कि यूनुस ने 2016 साल की जो इलेक्शन हुई थी अमेरिका में जी, उस समय $1.5 लाख की अपने पॉकेट से डोनेशन दिए थे हिलरी क्लिंटन को। और ये डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है। और डोनाल्ड ट्रंप जब एक बांग्लादेशी डेलीगेशन आए थे वॉशिंगटन डीसी में 2000, ये जब वो वहां के राष्ट्रपति जब थे, तो उसने कहा कि भाई कहाँ है वो माइक्रो लैंडर, कहाँ है, मैं उसको देख लूंगा, बोल रहे थे करीब 5-6 साल पहले। तो अब मेरे ख्याल में मोहम्मद यूनुस के हाल बहुत खराब होगी, एक चीज। दूसरी चीज है कि बांग्लादेश की कोई बेनिफिट्स नहीं आएंगे, ये जो है ना, ये चाइना +1 स्ट्रेटजी का, बांग्लादेश विल नॉट सी एनी बेनिफिट। सो और एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, भारतीय जो निवेशक है, जो उद्योगपति जो हैं, उन्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि बांग्लादेश से गारमेंट्स एक्सपोर्ट डाइवर्ट हो जाए इंडिया पे, और नए इंडस्ट्रीज होना चाहिए, जैसे कि वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो बांग्लादेश के पड़ोसी जो राज्यों हैं हमारे, वहां पे आना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो वेस्ट बंगाल में कुछ नहीं होगा जितने टाइम हमारे ममता बनर्जी वहां है, पर असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह में देयर शुड बी अ बिग फोकस ऑन अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड इंश्योरिंग कि we take full advantage of the turmoil in Bangladesh and attract flows. Now, तो आपके ये प्रश्न जो थे उसके, I think the answer is tariffs. There'll be no special tariffs on India.
Instead, in fact, there'll be tariffs on India's rival economy, China, very large tariffs. And the benefit can be, benefits will certainly flow to India. Apple के जो manufacturing है, I think there'll be an acceleration in Apple moving its production to India. Right, but Apple alone is not enough. What I would really want to see is Walmart. I would want to see H&M. I would want to see, the big garment manufacturers moving to India. I would like to see Beximco of Bangladesh. Beximco of Bangladesh, uske jo, the owner of Beximco is in jail because he's supposed to be close to Hasina. So Beximco is still the biggest company in Bangladesh. उनको कहना चाहिए भाई यहाँ आओ, वहाँ आपको वहाँ पे जेल पे भर रहा है नहीं गवर्नमेंट, वहाँ से आप इधर आ जाओ, उड़ीसा में निवेश करो, उड़ीसा में चलाओ या आसाम में चलाओ या बिहार या झारखंड, जहाँ चाहिए आ जाओ. और नॉट जस्ट दैट, देश गारमेंट जितने कोई है उनके जो बड़े बड़े गारमेंट्स एक्सपोर्टर्स, उनके सब जो मालिक हैं उनको जेल में भर रहे हैं ये लोग. तो यहाँ आ जाओ भाई, हमारे देश में हमें आमंत्रण करना चाहिए कि आओ, यहाँ आओ और यहाँ निवेश करो. राइट. सर चलिए, एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मिस्टर समीर दलाल. ही इज प्रेसिडेंट अकबरलाल एंड सन स्टॉक ब्रोकर्स. वेरी गुड आफ्टरनून समीर सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. समीर सर, बहुत मेजर इवेंट्स यूएस से जो थे, दे आर मोर और लेस ओवर. प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर ओवर, ट्रम्प इज द विनर. और उसके बाद फेड ने 25 बेसिस पॉइंट की फिर से कटौती की. बोथ दीज फैक्टर्स जिसका बाजार को इंतजार था, अनसर्टेनिटी इज ओवर बट स्टिल आवर मार्केट्स आर डाउन. क्या लगता है आपको, हम बेस बना चुके हैं, यहीं पे कंसोलिडेट करेंगे या फिर अभी और स्टीप करेक्शंस की उम्मीद हमें रखनी चाहिए? थोड़ा मुश्किल है ये टाइम पे बताना कि अगर the correction is done, because जो आपने previous speaker बोल रहे थे, I hope whatever he says comes true and India is able to capture some amount of market share from China, Bangladesh, Vietnam, Mexico, wherever. But the problem is कि Donald Trump wants to shift manufacturing to America. उनका मिशन वो है, ऐसा नहीं है कि उसको चाइना से लेके इंडिया में देना है या यहाँ से लेके. He wants to bring the manufacturing to America. So taxes are going to be levied across the board for everyone to some extent. India may, in the near term, short term, we may get a little bit of benefit, but the long term, if the manufacturing does shift to America, तो फिर India may be negative, थोड़ा impact आ सकता है. So that is why there is a bit of worry in the Indian market on that basis. Now, दूसरा जो बड़ा problem रहा है is the fact कि FIs continue to sell. Uncertainty on a lot of factors has gone away. Interest rate cut हो रहा है, यानी कि liquidity should be something that could generate, be more freely available or, earn better return. But the fact is, after knowing everything, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है. And that is a cause of concern. Why it is going out, we've not been able to pinpoint. पहले सब लोग को लगा कि maybe थोड़ा shift हो रहा है from India to China. But I think globally liquidity is not a problem. पैसा तो खूब है दुनिया भर में. अगर पैसा थोड़ा चाइना में डालना था, they don't need to withdraw 1 lakh crore from India to put there. We are a very, to say कि इंडिया में से $10 billion निकाल दिए, ठीक है, there are trillions of dollars in economy sitting abroad. It just requires a Warren Buffett to put $10 billion in India and that story can be over. So I think the problem is something different which we are probably not able to catch. Maybe it's the fact कि valuation ज़्यादा है, maybe it's the fact कि earnings उतने अच्छे नहीं आ रहे. So we need to put everything as a conjunction together. और मेरे हिसाब से probability is that the market could probably consolidate with a downward bias. मैं वैसे कहूँगा. Good afternoon, Prasenjit sir. Sir, फेड रेट कट्स की ही बात करते हैं. और फेड ने रेट कट्स कर दिए हैं अब तक, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 75 बेसिस पॉइंट्स का अब तक कट हम देख चुके हैं. तो ऐसे में क्या इस पर आरबीआई रिएक्ट करने वाला है, और अगर करेगा तो क्यों, और नहीं करेगा तो फिर क्यों? देखिए, मेरे ख्याल में जो आरबीआई ने एक बड़ा पॉलिसी एरर कर चुके हैं, क्योंकि अगर आप देखें, कोर इन्फ्लेशन has been below 4% since December 2023. And even headline inflation was below 4% for 2 months. It was known that it would be below 2% for
those 2 months. At that time, the RBI should have cut rates both in August and in October. But it did not. That is a policy error, and that is an important reason why earnings growth looks weak. Now, if you look at, for instance, I take a very close look at corporate tax revenue growth in India. Corporate tax revenue growth has slowed sharply. It is in the first half of FY25. Corporate tax revenue is up only 2.3% year on year, and personal income tax is growing at over 30% year on year. But corporate tax revenue is up only 2.3%. That suggests that we already have a significant deceleration in corporate earnings. And why? Because unnecessarily, we have an extremely high interest rate and a high real interest rate. So if you have core inflation below 4% since December, the RBI has no influence on food inflation. What can the RBI do with food inflation? Food inflation is determined by non-monetary factors, and that it will come and go. Now, this month, we are going to get the strongest Kharif harvest in at least 4 or 5 years, perhaps the strongest in several decades, because this year, rain during the monsoons was 8% above normal, and it was one of the best monsoons in about a decade. Therefore, we are likely to see food inflation coming down. And if the RBI has any sense, if the MPC has any sense, they should cut rates. I mean, they should cut rates 50 basis points, not just 25. But they are extremely cautious I think they are, this RBI, particularly over the last 6 months, has been making a terrible policy error. Well, they have now moved to a neutral stance. If they have a neutral stance, then at a minimum, they should cut rates. So I think they should cut rates. Whether they will or not is still questionable, because we will not really have the November inflation number in time for the next policy meeting. So if they are looking to see the white of the eyes of headline inflation below 4%, they will not have it. And therefore, they may not cut. But it would be foolish not to cut. And the key reason why the markets are weakening in India, one key reason is that the economy is decelerating unnecessarily because of high interest rates. And that deceleration is reflected also in corporate earnings. Now, the other point, of course, the other factor, which the RBI has no influence over, is that China, after 5 years of being totally down in the dumps, basically, if you look at global emerging market indices, China's weight 5 years ago was nearly double of India's. Now, China and India have almost the same weight in the benchmark emerging market indices, because India has done so much better than China. But now that China is providing a substantial stimulus and continuing, China is going to continue providing stimulus because none of the stimulus is going to work. The economy is in too much trouble. There's too much real estate overcapacity. There's too much industrial overcapacity. So no amount of stimulus is going to help China in any material way, but it'll help sentiment. And therefore, we have that as well as a challenge for India. So my view is that India, unless the RBI comes to its senses, I would agree with the other speaker that we're going to see further, at least modest weakness in the market. But if the RBI comes to its senses, the reality is that the Indian economy is still the fastest growing in the world. And that fastest growing economy will naturally translate to continued strength in corporate earnings as well, recovering corporate earnings once interest rates begin to ease off. And the other factor is that from January next year, you'll see inflation coming down to below 3%. Headline inflation from the first quarter of next calendar year will be closer to 3% than 4%. And therefore, there'll be ample scope to cut. But RBI has wasted nearly half a year by not cutting rates. बिल्कुल सर,
प्रसन्नजीत सर, एफआईआईज की ओनरशिप की बात की थी आपने कि एफआईआईज सेलिंग कर रहे हैं और बहुत बड़ी सेलिंग की है, तो एफआईआईज ने जो एनएससी लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें जो उनकी परसेंटेज है उसमें 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है वो। ऐसे में एफआईआईज की वापसी को आप कैसे देखते हैं? कब तक हो सकती है वापसी? सेक्टर वाइज अगर होगी तो आपको किन सेक्टर्स में लगता है कि होगी? और क्या मार्केट में अभी ये जो कंसोलिडेशन का जो हम फेज देख रहे हैं, क्या ये अभी लंबा चलने वाला है? तो FIs क्यों सेल कर रहे हैं, that is the point that we were discussing. We are not able to pinpoint at this point, right? Confluence of many factors. अगर वो वापस आते हैं, I think banking is one of the spaces that they could come back quite aggressively, and especially private sector banking, क्योंकि वहाँ पे valuations actually comfort आने लग गए हैं. So that is where we think some amount of benefits will come. Also, India, जो आपके previous speaker ने कहा, is the fastest growing economy. So India focused stocks, companies that cater to the Indian domestic economy, वहाँ पे you could see them coming back in a bigger way. Now I'll just give you, auto industry is something that India can grow at huge amounts. Opportunity बहुत large है. But the fact is कि growth has slowed down for interest rates being high, maybe for the fact कि the discretionary spend has come down overall. But अगर वो pickup होती है, तो I think auto space is somewhere where we could see more interest coming in. Mahindra ले लो, Maruti ले लो, जहाँ पे valuations are not denying a little rich, but अगर operational efficiencies आ जाते हैं, तो then they may not look as rich. Same in QSR space, same जहाँ पे operational leverage रहती है, वहाँ पे maybe you can see these FI coming back. My view, I think we are going in for a slightly longer consolidation to answer the immediate last question जो आपने पूछा, for the simple reason कि valuations had run up far more than fundamentals. It is more important for fundamentals now to catch up with valuation, या फिर stocks to correct down to where the fundamental levels are. So this consolidation period could last for a good 3 to 6 months. And in January, when Donald Trump comes, we do not know कि वो क्या announcement करेंगे. So people are not going to go all out bullish and take long calls right away. Anyways, December month may we see profit booking from FI. So I don't see any immediate trigger for pulling the market rally up. So I think sideways consolidation to a slight negative bias, जो मेरा initial view था. Given all of these things, I'm saying that this is what our view is. Okay, समीर सर बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. Basu sir, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. Lots to talk, Basu sir. We'll have a special half an hour program with you very soon, where we'll dwell upon Trump की strategy क्या होगी और इंडिया को क्या करना चाहिए. Thank you Mohini for joining in. तो अभी के लिए इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी कल. Thank you so much for watching Jagran Business. Thank you. Thank you very much.